Lately, I've been losing sleep, dreaming about a victory. Lately, I've been too hard, picturing them all counting dollars, maybe counting Good morning. How are you? How are you feeling, buddy? How are you feeling, buddy? Arjit, tell Good me. morning, good morning, Tushar. It's my pleasure to have with you here. Okay. So, Arjit, I would like to welcome you all on our YouTube channel, Aviation Live. And today I will be taking your feedback, okay, regarding this spoken English classes. So, Arjit, how are you feeling right now? Before joining the classes, you were not even able to speak in English. But after, taking this spoken English crash course of 1 month, I can see that, you have been changed a lot and your personality also has been groomed. So, I just want to know that how was your journey of this, 1 month in our spoken English classes? Please tell me. Yeah, please tell us. So, generally speaking, um, I'm very much fearful about the English because my grammar is very much weak from the time when I was studied from the school and college and all. So, I'm always trying to keep better for Yeah. my grammar so that I can conversate with easily with others. Okay. So But yeah. So do our class was useful regarding from this grammar point of view. Okay. Like what was grammar which I taught, which you learned from our class? Please tell the audience. Okay, so sir, basically it's like destiny will will interact each other. So I'm very much thankful for you because you will make myself clear. My doubts will getting clear after joining your English classes as well as aviation also, and it's so that I can say that today I'm not too much, but yes, I'm fluent in English Okay, somehow. fantastic. So Arjit, please tell the audience that what actually got happened in our spoken English course. Like in 5 days, in starting 5 days, what I taught you. After that, what got happened. Then how we started the practice of GD, then lecture it and all. How was basic the days and all and how it got passed. Yeah, please tell the audience. Yeah. Yes, sir. Frankly speaking, I'm not very much good in English. After all, and I'm also not very much good in communication. And by joining your classes your your teaching skills will motivate me a lot and make my fear came out of my mind and all, Fantastic, fantastic. and I will be able to be here in front of you right now. Okay. So Arjit, did you like our GD sessions, the group discussion and all, whatever we practiced? How was that? Yes, sir, no doubt it's very much interesting and very much knowledgeable, sir. Okay. And what about the lecturate? Did you liked it? Lecturate sessions. How was Yes, that? yes, sir, totally no doubt. No thought. I like it. I like it very much. So, is there any feedback which you like to give us, like to the Team Aviation Life and to the spoken English classes? Is there any feedback like is it worth it and is it worth it or not? Like, please let us know. Yeah. Yeah, definitely, sir. I just want to say that yes, it's too much worth it. Okay. Um, and I basically said that don't go with my words. Please, please catch up the duos of aviation life. Then you will you will all automatically see the results. Yeah. And apart from this, like, how was the price? Is this 2,999 price was like good, or like is it too much high or like too much low? What do you like think about this, the pricing and all? As I told right now that yes, it's very much beneficial, and don't
don't go with my words. Just just make a conversation and go for the YouTube videos, search and explore the videos of Sir spoken English and aviation also. You will definitely got your answers. चलो ये तो रही बात अरिजीत इंग्लिश में, राइट? अब हिंदी में बात कर लेते हैं। अब हिंदी में बताइए कि मतलब कैसा लगा आपको क्लासेस ज्वाइन करके, बेसिकली कैसा था आपका लाइक ये जर्नी, 1 मंथ की जर्नी आपको लाइक वर्थ इट लगी कि नहीं लगी, क्या क्या सीखा आपने? बताइए। सर सच बता रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा शाई टाइप का था और जो है मुझे इंग्लिश तो क्या हिंदी में भी थोड़ा बात करने में प्रॉब्लम होता था कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे, शब्द जो है शब्दार्थ शब्द वो सब मुझे थोड़ा दिक्कत होती थी। तो मैंने ज्वाइन किया आपका इंग्लिश क्लास, तो उससे मेरा थोड़ा डर फटा मन का, और उसके बाद आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया सर। स्टेज फियर जो होता है, मतलब पब्लिक के सामने कैसे इंटरेक्शन होता है, मतलब पब्लिक या फिर कोई भी पीपल है, इंटरव्यूअर भी क्यों ना हो या फिर कोई भी, तो उसके सामने कैसे कन्वर्सेशन होता है, सब आप ही ने मुझे सिखाया सर, और एक अंदर का जो डर था वो भी निकाला। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। वेल, ये आपकी मेहनत से हुआ ना अरिजीत। ठीक है, देखो यार, ऐसा रहता है कि पढ़ाने में ऐसा कि बच्चा जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक कोच भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोच यस कोच सर, एक हद तक ही कर बट सकता है वन जब तक थिंग आई हैव टू, हाँ हाँ, बताइए या yes sir, but one thing I have to say that I am very much dumb person. It's genuinely, I'm not saying about मैं मतलब कुछ फेक नहीं रहा हूँ। आई एम वेरी मच डम पर्सन। I'm very much poor in my maths as well as my science, physics, chemistries in my school college days. But apart from all these, I'm cleared all my चलो, डम बम नहीं होना होता ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो, अब डम बम कुछ नहीं हो। ठीक है, यू आर अ स्मार्ट पर्सन एंड वेरी सून यू विल बी जॉइनिंग एविएशन इंडस्ट्री आल्सो। ओके, नो डाउट्स अबाउट दैट yes, पर्टिकुलर I थिंग। think बहुत I जल्दी think आपका so. सिलेक्शन होगा। वो तो अभी आप कॉलेज में हो, अभी आपका फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा है, इसलिए भी आप इंटरव्यू दे नहीं पा रहे Yeah, हो, बट वेरी सून लाइक यू yeah, विल बी गिविंग द definitely. ग्राउंड स्टफ इंटरव्यू एंड cabin interview and आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड, राइट? सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स मैन। ओके, कोई डम बम कुछ नहीं होता है, बस अपनी अपनी स्किल्स होती है, अपना अपना टैलेंट होता है अलग अलग फील्ड में, राइट? अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डम हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक 1 मंथ की स्पोकन इंग्लिश क्लास के बाद लाइक आई जस्ट सॉ वेरी वेरी फैंटास्टिक चेंज इन योर पर्सनैलिटी, एंड आप भी रेडी हो गए कि फीडबैक मुझे देना है। तो यार मतलब बहुत सही लगता है ना बच्चे जब फीडबैक शेयर करते हैं। तो आपके मेरे ऋषिकेश ने भी Sir, फीडबैक it's दिया है। all because of you and your collaboration with me. चलो, ऐसा कुछ नहीं ना यार, मतलब It is, बच्चों को भी जोर लगाना पड़ता है तभी कुछ होता है, राइट? yes, मैंने अभी sir. अभी बताया I था am the रिसेंटली। living example uh, what I said. That और फिर इमेजिनेशन। I have no words to say. I have no words to say that. चलो, बहुत Today, बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत today बढ़िया I'm here अजीत, with बहुत बढ़िया, बहुत you, बढ़िया। sir. बहुत अच्छा लगा यार। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक एंड ऑल, एंड गाइज यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर इंग्लिश जस्ट लाइक अरिजीत। Arjit was a part of spoken English batch, and finally he has taken our course of this 1 month, and finally, as you can see, the results are in front of you. Arjit is speaking very much fluently and very much confidently also. So you can also become like Arjit, guys. आप भी दोस्तों अर्जित की तरह बन सकते हैं हमारा स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स ज्वाइन करके, जो कि सिर्फ 2,999 रुपीज़ का है। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइज। जय हिंद टू ऑल, बाय बाय।